said we'd find him here, but I don't see a trace of him. There's nothing but a rock here. What's this supposed to mean? If you ask me, this rock... You're here. We're here. Step aboard. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Isn't all life a one-way trip? Once you embark on the journey, there's no turning back. What is this place? His memories. Early days, he'd had an eye for the finer things, and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and ginger, I say. You can't have an eye for the finer things, while the Buddha oversees the three realms? Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Ears fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his weak Frankenchurch gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say he was no less insolent than that yellow-browed brat. Wait, isn't it that lady of some sort? It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. 3 times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings.
No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Badger. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness? Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps. They simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? 5 of the 6 relics call for one. Badger, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Mind, it's mind. What did you just see? The 3 of us? That was the last one. Oh, I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes and no. Cut to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, 5 of his 6 senses endured and were taken by the Yaoguai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the 6. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good? Never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Sun Wukong is long gone! But deep down, you know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one, perhaps, shall bear the name in his stead.
Here, we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his 6 senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the 6 into one. Then, you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face the final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name!
फाइनली भाई फाइनली चार राउंड हुए हैं भाई, पर फाइनली डेस्टिन 1 बिकम वुकोंग। भाई ये भी तो खाली शरीर था इसका, अगर पूरा असली वुकोंग होता भाई क्या हालत करता है। ठीक है तो भाई मेरे रेलिक वापस मिल रहे हैं मैंने। ओके 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 भाई देख रहे होगे मैंने भाई इस खातिर ना सूट चेंज करना पड़ा, क्योंकि भाई मैंने बार बार वो पंखा घुमाना पड़ा था इस खातिर, जैसे कि मैंने एयरलाइन गली करा था सेम थोड़ा करा इस गली भाई। बट फाइनली भाई एक एक करके सारी रेलिक वापस आने लगी मेरी। भाई यो हो कैरेक्टर, गेम वालों ने कैसा कैरेक्टर बिल्ड कर रखा है इस बंदे ने, एक शब्द नहीं बोला पूरे गेम में, और इसका भाई इतना ज्यादा महत्व बना दिया। Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. Okay. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. भाई ये वही चीज बोल रहे हैं कि ना एक मिथ है, बस एक सोची समझी चीज है, बस ये कोई असल चीज नहीं है। ओके तो भाई ये भी होगी वो एंडिंग जो ट्रू एंडिंग है। अगर भाई वो नकली एंडिंग की तरफ जाता है ना, मैं अगर एयरलाइन के लिए फाइट नहीं करूँ होता तो ये भी देखियो क्या सीन हुआ, फिर बताता हूँ मैं कि फिर क्या होता। ये भी जबकि मैंने हरा दिया वुकोंग, तो शायद फाइट तो तभी होती। और जो यो है ना भाई जो इसने उठाया ये वही चीज़ है कि जिस तरह इसकी शक्तियाँ कंट्रोल करी जा होती, ठीक है। तो उस स्टोरी में क्या होता भाई कि जैसे जो बैठा है ना ये अपना डेस्टिन 1, तो यो भाई इसके सिर पे पहना देता इसने, और फिर तब वो रीस्टार्ट हो जाती स्टोरी जो कि वुकोंग के साथ हुई थी, क्योंकि इसके पास ही रेलिक है सारे, ये भी पूरी इतना ही पावरफुल है। और भाई फिर वही सेम सीन हो जाता है कि इसकी भी रेलिक से बढ़ जाती है, लेकिन इस बार यो नहीं पहनेगा इसने। तो भाई यो थी इस गेम की एंडिंग। और इसका भाई देख लो एक बार एनिमेटेड सीन भी देख लो भाई, कौन था वो कोंग, क्या था वो कोंग, योर आयरलैंड। What does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. ओके तो भाई ये चीज वो बता रहे थे कि ना कि ये जब भाई इसने जो मिली पावर मिली कि बुद्धा पावर मिली, लेकिन भाई कुछ बोल रहे हैं कि भाई वो था ही नहीं जिस तरह बुद्धा ने पावर दी थी, क्योंकि वो तो भाई जो जर्नी टू द वेस्ट थी उसी में मर लिया था। और भाई कुछ बंदे फिर का जर्नी टू द वेस्ट कुछ था ही नहीं, तो भाई सारी समझ एक मिथ है। जो वुकोंग था भाई वो ब्लैक था है ना, और ये कि भाई हाँ मनगढ़ंत कहानी है। ये स्टोरी भाई उल्टी चल रही है, उल्टी कि कैसे वुकोंग वो बंदर एक वुकोंग कैसे बना, और भाई फिर वो कैसे मरा कुत्ते ही, कैसे इतना पावरफुल बना वो, तो सारी चीज बता रहे हैं भाई। बाजी स्टार्टिंग में साथ था इसके, जो कि भाई स्टोरी में मैंने पता चला भी है।
ओके भाई ने साथ में मिलेगा बहुत सारी फाइट जीतती है। अरे टाइगर मैंने कुछ वैसा क्यों लग रहा था? तो इसके सिर पर भाई वो था उस टाइम पे, इसकी शक्तियां कंट्रोल हो रही थी, कर रखी थी उस टाइम पे भी। भाई बात ही खतरनाक था भाई। क्या गेम का पार्ट 2 भी बोल रहे हैं होगा तो भाई जरूर खेलेंगे भाई, स्टोरी बहुत खतरनाक थी भाई। इसके अंदर वो वन साइड तो वो कौन का आत्मा थी, शिविर था, पता नहीं कैसे, लेकिन भाई ये इसने लेके आए थे ना यहाँ पे जो भी था भाई, घोड़े बैठा था, कौन था पता नहीं, तो इसने भाई आजाद करवाया था वो कौन, ठीक है। और भाई अब इसने वो मिली थी पावर यहाँ पे गोट्स वाली, और फिर भाई जो दावत हो रही थी ना वहाँ पे, उस दावत में भाई इनवाइट नहीं करा था इन्हें, जिस वजह से इसने इतना ज्यादा गुस्सा आया था भाई, इसने पूरी जगह तबाह कर दी थी। देख लो भाई ये लग रहे करण, और ये इरलांग भाई स्टार्टिंग में इसके साथ था, स्टोरी में हमने लगा है कि विलन है, लेकिन भाई विलन नहीं था वो, ये तो दोस्त थे भाई खेड़े भाई, लगा दी सारी जगह मांग भाई साहब। लो भाई यो कर दिया इसने यहाँ पर साइन कि निकल गया मैं यहाँ पे। भाई यो स्टोरी वो थी कि जो स्टार्टिंग में नहीं इसने लेना आई थी भाई कि तुम हमारे साथ आ जाओ फिर पे, लेकिन इसने बोल दिया भाई नहीं मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ, अपना भाई नीचे ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्ति में मैं ठीक यूज करूँगा। तो भाई जब फाइट हुई थी एयरलाइन के साथ इसकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा था ना, तो इसने वो कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ भाई, मैंने रहना तुम्हारे साथ। इसके आगे एक स्टोरी तो भाई पता ही है, फिर एयरलाइन के साथ फाइट हुई थी, फिर भाई इसके सिर पर वो बन गया था फिरता है, और फिर नहीं हो गया था भाई कि मर गया वो, फिर स्टार्ट हुई थी डेस्टिनी 1 की स्टोरी। तो भाई यो था गेम, यो थी स्टोरी। अगर पसंद आया है तो भाई वीडियो लाइक करियो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। नहीं एक तो मैंने स्टार्ट करी रखी है भाई, टूम रेडर की उसने कंप्लीट करेंगे, और फिर करेंगे स्टार्ट गोस्ट ऑफ तोशिमा या फिर रेजिडेंट एविल विलेज, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।